राजपूत रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय, हनुमान की हुम प्यारी। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता कंबाइंड बैंड मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का सर्वत्र विजय की धुन बजाता हुआ यह दस्ता 68 बैंड वादक जिसमें शामिल नेतृत्व सूबेदार मेजर गोपाल सिंह नायक। और अब सलामी मंच के सामने सजीले जवानों से सुसज्जित असम रेजिमेंट का दस्ता। टुकड़ी में उत्तर पूर्व के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व है। नेतृत्व असम रेजिमेंट की 14वीं बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट के मार्चिंग दस्ते को 3 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग कंटिंजेंट का पुरस्कार मिला है गणतंत्र दिवस परेड में। दस्ते का युद्ध घोष असम विक्रम, आदर्श वाक्य राइनो चार्ज। सलामी मंच के सामने अगला दस्ता जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व 5वीं बटालियन के मेजर रितेश तिवारी कर रहे हैं। जवान 1970 में पहनी जाने वाली वर्दियों से सुसज्जित हैं और 7.62 mm SLR राइफल्स धारण किए हुए हैं। आदर्श वाक्य बलिदानम वीर लक्षणम, युद्ध घोष भारत माता की जय। The combined band of the Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, the Army Medical Corps Centre and 14 Gorkha Training Centre, comprising 68 musicians led by Subedar Major M.S. Reddy of AMC Centre. Playing the tune, Assamese Warrior. Approaching the saluting dais now is the contingent of the Sikh Light Infantry led by Captain Utsav Kumar of 15 Sikh Light Infantry. This contingent is attired in the current day Indian Army uniform and carrying 5.56mm INSAS rifles. It's interesting to note that they have the singular honor of 3 distinguished officers gracing the office of the Chief of Army Staff. General M.M. Narawane is the current colonel of the Sikh Light Infantry Regiment. The Army Ordnance Corps contingent, led by the young woman officer Lieutenant Manisha Bora. This contingent too is attired in the current Indian Army uniform. And the formal recognition of this Army Ordnance Corps was with the establishment of the Board of Ordnance on the 8th of April 1775. The contingent is participating after 8 years in this parade. The combined band of the Bihar Regimental Centre, Army Service Corps Centre and the Army Ordnance Corps Centre. 68 musicians marching past the saluting dais, saluting the Supreme Commander, playing the tune Faulad Ka Jigar, led by Subedar Major G. Biju. शत्रुजीत के आदर्श वाक्य वाली टुकड़ी अनेक सम्मान हासिल करने वाले पैराशूट रेजिमेंट के पैराट्रूपर्स की है।
इसकी कमान 23वीं बटालियन के मेजर विशेष संभाल रहे हैं। इस बल के जवान न्यू कॉम्बैट यूनिफॉर्म में सुसज्जित हैं और ये वेपन 5.56 mm इंसास राइफल धारण किए हैं। ये जवान मेजर JM सेते द्वारा 1997 रचित रेजिमेंटल गीत कदम बढ़ाए जाओ कदम मिलाए जाओ की धुन पर डबल मार्क टाइप में मार्च कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन पैराट्रूपर्स ने अनेक सम्मान हासिल किए हैं। नौसेना का ब्रास बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट विंसेंट जॉनसन के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा, सब लेफ्टिनेंट सूर्यकांत और सब लेफ्टिनेंट अवंतिका दुरईस्वामी तथा 96 युवा नौसैनिकों के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। नौसेना की झांकी भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं की प्रदर्शन मंजूषा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत मुख्य समावेशन को दिखाया गया है। इसके साथ ही वर्तमान में जारी आजादी के अमृत महोत्सव को भी इस झांकी में विशेष स्थान दिया गया है। लेफ्टिनेंट प्रीति, लेफ्टिनेंट मयंक बागौड़ झांकी कमांडर हैं। झांकी के अग्रभाग में 1946 में नौसेना के अभियान को दर्शाया गया है जिसने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। Going past the saluting base now, we have the Indian Air Force Band Warrant Officer Ashok Kumar leading the band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March. Following their band, approaching the saluting base, the Indian Air Force marching contingent. Comprising 96 airmen and 4 officers led by squadron leader Prashant Swaminathan. Marching past in box formation, 12 rows, 8 columns. Coloring Rajpath with the color of the skies. And right behind the marching contingent, we have the Air Force tableau. Going past the saluting base, the theme, Indian Air Force transforming for the future. On the tableau, we have Squadron Leader Manish Kumar, Squadron Leader Ashirwad Mishra, Squadron Leader Shashi Prakash Mishra, and Flight Lieutenant Shivangi Singh. The tableau from the DRDO. DRDO developed sensors, weapons and electronic warfare suite for LCA Tejas.
led by Squadron Leader Nimish Koradia of 45 Squadron Flying Daggers. The LCA is an indigenously developed fourth-generation aircraft. To increase the capability of this aircraft and empower it further with indigenous sensors and weapons, multiple systems have been developed. राजपथ पर देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन, डीआरडीओ की दूसरी झांकी, पनडुब्बियों के लिए हवाई स्वतंत्र प्रणोदन यानी एयर इंडिपेंडेंस प्रपल्शन सिस्टम को परिलक्षित करती हुई सलामी मंच के सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की ओर अग्रसर। देश प्रेम के रंगों से ओतप्रोत 73वां गणतंत्र दिवस समारोह, मुख्य आयोजन स्थल राजपथ, उपस्थित जन समूह मुग्ध होकर इसका आनंद लेता हुआ और अब सलामी मंच के सामने पहुंचता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का दस्ता। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस मार्चिंग कंटिंजेंट के नेतृत्व के साथ हैं डिप्टी कमांडेंट एच.जी. मंजुनाथ। उसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट निशिश शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट चांदनी चैटर्जी और असिस्टेंट कमांडेंट अपूर्वा हुरे भी इस जोशीले दस्ते में शामिल। भारतीय तटरक्षक बल के पास 158 जहाज और 70 वायुयान मौजूद हैं। राजपथ पर अगला दस्ता सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बैंड का इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में। हम हैं देश के रक्षक की धुन बजाता हुआ। इस सुरीले दस्ते में 99 बैंड वादक शामिल हैं। और अब सलामी मंच के सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मार्चिंग कंटिंजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक कर रहे हैं। 1939 में स्थापित सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल में आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा जवान शामिल हैं। Bandmaster Inspector Rajendra Singh, leading the Delhi Police Band comprising 4 sub-inspectors, 15 assistant sub-inspectors, 20 head constables and 46 constables, playing the ever-popular Delhi Police song. Just behind them, the best marching contingent of last year of the Delhi Police. 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade, led by Assistant Commissioner of Police Vivek Bhagat. The motto of the Delhi Police, Shanti, Seva aur Nyay, meaning peace, service and justice. Front of the saluting dais now, smartly saluting the Supreme Commander of the Armed Forces, the elegantly dressed band of CISF playing the tune Amar Senani. Sub-Inspector Karan Singh in command.
And just behind them, the CISF contingent commanded by Shri Umesh Kumar Gautam, Deputy Commandant. The motto of CISF, protection and security. सशस्त्र सीमा बल का बैंड इंस्पेक्टर गणेश दत्त पांडे के नेतृत्व में। बल के बैंड के 72 जवान जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान गीत की जोशीली धुन पर राजपथ पर आगे बढ़ते हुए। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से उत्पन्न हालात एवं सीमांत क्षेत्रों की जनता के खोए आत्मविश्वास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 1963 में एसएसबी का विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में गठन किया गया और अब सशस्त्र सीमा बल का मार्चिंग दस्ता। इस दस्ते की अगुवाई उप कमांडेंट निरुपेश कुमार कर रहे हैं और इनके साथ 2 महिला सहायक कमांडेंट और 96 जवान भी मार्च कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व। दशकों से राजपथ का रोमांच रहा सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची के नेतृत्व में आ रहा है। इंस्पेक्टर अचल सिंह और 2 आईसी, 2 सब इंस्पेक्टर भी 35 अन्य के साथ दस्ते का भाग है। केसरिया साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर गोटा आदि से सजा ये दस्ता सबका मन मोहता हुआ। किस तरह से संतुलन बनाते हैं ये देखने लायक है। The only band of its kind in the world, the CF Camel Band. बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर बोधराज की अगुवाई में अब सलामी मंच पर दस्तक दे रहा है संसार में अपनी तरह का एकमात्र ऊंट सवार बैंड। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की स्वर लहरियां बिखेर रहा है। इस बैंड का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हो चुका है। Color me with grace, color me with beauty, color me with pride. Approaching the saluting base, the NCC Boys Marching Contingent comprising 100 young and smart senior division cadets led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore of the NCC Directorate, Rajasthan. With commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 14 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth organizations in the world. At the forefront of nation building through its youth power, the NCC Boys Marching Contingent. These cadets have excelled in humanitarian aid, sports and adventure activities. Following the NCC Boys Marching Contingent, we have the military band, the combined military band consisting of 48 musicians from the Corps of Military Police Regiment Centre, Kumaon Regimental Centre, Bihar Regimental Centre and the
AMC, led by Subedar Major L.D. Mahapatro. The tune, Kadam Kadam Badhaye Ja. Marching smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhaye Ja, the NCC Girls Marching Contingent, Senior Runner Officer Pramila of the NCC Directorate Karnataka, is proudly leading this contingent. The cadets have been drawn from all 17 directorates of the NCC. Paragliding, rafting, mountaineering, these girls have excelled. Led by Baraya Siddhi Ramesh from Diu, Union Territory, Ahmedabad Directorate, the NSS Marching Contingent, comprising of 100 volunteers. Blood donation, environment, mitigating COVID-19, Ek Bharat, Shresht Bharat program and Fit India program. This organization has played an important role, and it's done this role for 51 years. The motto, not me, but you. सलामी मंच के सामने अब गुजर रहा है मास पाइप्स एंड ड्रम्स का दस्ता। 8 रेजिमेंटल सेंटर से 105 बैंड वादक जिसमें शामिल हैं। नेतृत्व सूबेदार मेजर उमेश अपाले बीजी किरकी से आते हैं। ये दल हैरेना हैरेना की सुनहरी धुन बजा रहा है। राजपथ पर मैकेनाइज्ड कॉलम्स और मार्चिंग कंटिंजेंट ने अनोखी छटा बिखेरी है और अब बारी है भारत के समृद्ध सांस्कृतिक वैभव के दर्शन की। राष्ट्रीय समर स्मारक शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, जहां पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और मेघालय की झांकी सलामी मंच के सामने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मेघालय अपनी स्थापना के 50 वर्ष मना रहा है। झांकी में राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले महिलाओं के सहकारिता आंदोलन को दर्शाया। सुदूर उत्तर पूर्व से चलते हैं अब गुजरात की ओर। अगली झांकी सलामी मंच के सामने गुजरात के आदिवासी क्रांतिवीरों को समर्पित है। 100 वर्ष पहले गुजरात के साबरकांठा जिले में जनजातियों ने दमनकारी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया था। ये झांकी उन वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि है। Moving down the coastline from Gujarat, we're on to Goa. And on the tableau, we have the symbols of Goan heritage, showcasing Fort Aguada, the Martyrs Memorial at Azad Panaji, and the music of Goa.
वांगडी मोगान सोगले वावरपी गोंय आमचे योकारी गोंय रुचीक दर्याद गोचोय वाऱ्या वांगडा धोलान कोय शीत कडी खावन कोय भांगराळे सोबीत आमचे गोवा The tableau of Goa being heartily applauded by spectators at Rajpath. And as they move on, we have visuals of the War Memorial, the grand spectacle of the Republic Day Parade, the 73rd Republic Day Parade. And we've got Haryana that has brought unequivocal laurels to India by winning the maximum number of medals in several national and international sporting events. ओलंपिक में हमें तिरंगा लगातार लहराना है वंदे मातरम नाम देश का इसी तरह हमें दुनिया तक पहुंचाना है वंदे मातरम देख ले दुनिया खेलों में के नंबर 1 हरियाणा है अपने गर्व से इस दुनिया को हमको ये समझाना है भारत है जान हरियाणा की भारत की जान हरियाणा है भारत है जान हरियाणा की हरियाणा से रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड राज्य की झांकी सड़क संपर्क और धार्मिक स्थलों के क्षेत्र में उन्नति संबंधी विकास परियोजनाओं से प्रेरित है। झांकी के अग्रभाग में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा दिखाया गया है। नारायण है बसे जहाँ पर गुरु गोविंद ने किया है ध्यान देवभूमि की पावन धरती तुझको शत शत मेरा प्रणाम माँ गंगा की धारा जहाँ कल कल बहे जमुना की बहती लहर मीठे स्वर कहे हिम पर्वतों के बीच में बदरी केदार स्वयं रहे नित विकास हो रहा है यहाँ हो रहे मार्ग से तू निर्मा। अगली झांकी अरुणाचल प्रदेश की एंग्लो अबोर आदि युद्ध। अरुणाचल प्रदेश भारत का सुदूर पूर्वोत्तर प्रहरी सीमांत राज्य है जहां पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ विविध मानव जातीय अस्तित्वों की स्वदेशी जनजातियां निवास करती हैं। From the eastern state of Arunachal Pradesh, we move to the southern state of Karnataka. The theme, Cradle of Traditional Handicrafts, the centuries-old glorious history. ಹೊನ್ನಬಾಗಿನದಾಗ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಬಳೆಯ ಕಲಶ ಕನ್ನಡಿ ಮೊಲ್ಲೆ ಮಾಲೆ ಕರಿಮಣಿಯ ಹೊತ್ತು ತಾರವ್ವ ತವರಿಂದ ತಂಗಿ ಹೊತ್ತು ತಾರವ್ವ ತವರಿಂದ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಮೊಗದಾಗೆ ಸಿರಿನಗೆಯ ಎಲ್ಲರ ಮೊಗದಾಗೆ ಸಿರಿನಗೆಯ
And now, changing direction again, the tableau from Jammu and Kashmir, showcasing the changing face of J&K. साड़ा है जम्मू साड़ी बकरी पशान नवी उम्मीद ते बड़ी गेदा नवी मसाल साड़ा है जम्मू साड़ी बकरी पशान साड़ा है जम्मू साड़ी बकरी पशान देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वैभव का प्रदर्शन 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में अगली झांकी छत्तीसगढ़ से, जिसमें छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को दर्शाया गया है। ग्रामीण परिवेश में पारंपरिक जानकारी और वैज्ञानिक प्रगति को समाहित किया गया है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड आगे बढ़ती हुई अब उत्तर प्रदेश की झांकी का अवसर। 75 वर्ष की उपलब्धियों पर केंद्रित है ये झांकी। मध्य भाग में काशी विश्वनाथ धाम के घाटों को दर्शाया गया है और झांकी के पिछले भाग में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का प्रदर्शन। भज विश्वनाथम काशी का गौरव लौटा जब खुला भव्य गलियारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा यहाँ ज्ञान की ज्योति मिटाती अंतर मन की पीर इस माटी में रचे बसे हैं तुलसी और कबीर आस्था को सम्मान मिला तो रोजगार भी आया हर जनपद का हुनर और उत्पाद विश्व में छाया खुशहाली की राह खुली है बढ़ता भाईचारा विश्वनाथ से मिलकर पुलकित है गंगा की धारा। Behind the tableau from Uttar Pradesh, the tableau from Punjab depicting the immense contribution made by Punjab during the freedom struggle. Paying homage to the gallant freedom fighters Shahid Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru, as well as showing Jang-e-Azadi Memorial recently set up at Kartarpur. पंजाब हमें कुल हिंद दे सिरदा ताज हमें हिंद दे अरिश ते चमकण वाला सब तो वखरा चांद हमें पंजाब हमें कुल हिंद दे सिरदा ताज हमें शहीद सुखदेव राजगुरु भगत सिंह उधम सिंह हमें मैं हलाला लाजपत राय हिंदुस्तान दे फर्ज हमें बंदा बंदा जाने जगते हिंदुस्तान दी जान हमें। Approaching the saluting days now, the state of Maharashtra showcasing biodiversity and biosymbols of the state. Inspired by achievements at 75 under the Azadi Ka Amrit Mahotsav, it depicts the state's 5 biosymbols, peculiar environmental sites, special flora and fauna. वनराईचा राजा आंबा तामण आणि मस्त शेकरू
हरियालाचे रूप देखणे निळे जांभळे फूल पाखरू अथांग सागर रम्य किनारे सह्याद्रीचे उंच कडे गवत फुलांच्या रंगांवरती महाराष्ट्राचा जीव जडे जपतो आम्ही जैव वारसा जपतो आम्ही वसुंधरा झाडे लावू झाडे जगवू हाच आमचा धर्म खरा तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस परेड में अब संस्कृति मंत्रालय की झांकी श्री औरोबिंदो के 150 वर्ष 15 अगस्त 1872 को जन्मे श्री औरोबिंदो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रवर्तक, आध्यात्मिक नेता, भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महर्षि और एक दृष्टा कवि थे। पहला, मेरा दृढ़ विश्वास कि जो भी उपलब्धि, प्रतिभा, शिक्षा और संसाधन ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं वह सब उन्हीं के हैं। दूसरा, जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकूं। मेरा तीसरा अनुराग है कि सामान्यतः लोग देश को एकजुट वस्तु के समान खेतों और चरागाहों, वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखते हैं। मेरे लिए देश मां है, उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूं। शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी के प्रमुख पहलुओं को दर्शा रही है। विद्या से हर छात्र होगा सक्षम। तक्षशिला नालंदा भरथारी लौट आएंगे फिर से वो शान हमारी। नवचार के पथ पर चलकर बनाएंगे एक नया कीर्तिमान। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनेगा भारतीय अभिमान। और नई तकनीकों से फिर जागेगा भारतीय स्वाभिमान। Approaching the saluting base now, we have the Ministry of Communication Department of Posts tableau, India Post Resolve at 75, Women Empowerment. The tableau displays the robust outreach and modern face of India Post that ties the entire country in one thread. लो आ गए हम फिर से एक बार, हाथों में चिट्ठी और दिल में लिए प्यार। हो रेत या समुंदर, जंगल हो या पहाड़, कंधों से कंधे मिला के रहते हैं हम तैयार। खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया, खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया। सुकन्या समृद्धि लाए हम, बचत खाते से संचय हो उत्तम उत्तम। डिजिटल भारत को लेके अपने साथ दोस्ती का बढ़ाते हुए हाथ। देखो 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 देखो, खोल के दरवाजा देखो आया आपका। Coming up now, the tableau from the Ministry of Textiles showcasing the theme Shuttling to the Future. The concept of this tableau is inspired by the shuttle used in weaving. This traditional weaving shuttle transforms to a space shuttle, reflecting the evolution of traditional textiles to futuristic technical textiles. India's strength, its textiles, natural fibers, now emerging as a global key player in technical textiles.
देश की चौतरफा प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन 73वें गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में राजपथ पर जो शान से आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में सलामी मंच के सामने एक के बाद एक झांकियों का आगमन जारी। राजपथ पर अगली झांकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को दर्शाया गया है। प्रगति पथ पर बड़ी चला, आशाओं को मिली उड़ान, भारत का कोना कोना जुड़ रहा, छू रहा समृद्धि का आसमान, नए भारत की नई उड़ान, पर्यटन का हुआ विस्तार, लोकला को मिला आधार, दूरियां घटी अवसर बढ़े, सब उड़े सब जुड़े। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की झांकी का आगमन हो रहा है। उपस्थित जनसमूह इन क्षणों को अपने मोबाइल कैमरास में कैद करने के लिए तत्पर। सीआरपीएफ की शौर्य, त्याग और वीरता की गाथा दर्शाती ये झांकी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। पहले भाग में सरदार पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने को दर्शाया गया है। बीच में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख का प्रदर्शन है और चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई का प्रदर्शन। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। लौह पुरुष ने जन्म दिया, सीआरपी का गठन किया, लेकर ध्वज पताका रणवीरों का चयन किया। आंतरिक सुरक्षा है धर्म हमारा, देश की रक्षा है धर्म हमारा, शांति प्रहरी है हम, सेवा निष्ठा है नारा। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। जय जय भारत, जय जय सीआरपी। Behind the tableau from CRPF, we have the Department of Drinking Water and Sanitation presenting its tableau on the theme Jal Jeevan Mission, Changing Lives. The Prime Minister had announced in August 2019 that he would like to remove centuries-old drudgery that is being faced by women and children in fetching water and improving the quality of life in rural India. As the tableaus go down Rajpath, once again we remind you that you can vote for the best tableau and the best marching contingent by logging on to the MyGov portal and registering your vote. अब पानी घर घर आता है, जल जीवन से अपना नाता है, ज़मीं बर्फ से पिघलता पानी, गहराइयों से निकलता पानी, पानी ही जीवन दाता है, जल जीवन से अपना नाता है। हर घर जल, हर घर जल, हर घर नल, हर घर जल, हर घर जल। We now have the Ministry of Law and Justice with the tableau of the National Legal Services Authority depicting Ek Muthi Asman, signifying the benefits of resolving a dispute through Lok Adalats. The front portion of the tableau has the Abhay Mudra, the hand gesture. In the rear, you can see the hand with 5 fingers opening one by one, depicting the 5 guiding principles of Lok Adalats. उल्लास न्याय का सबके लिए,
विश्वास न्याय का सबके लिए, अपने इस हिंदुस्तान पर हक हमारा भी तो है, इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा। राजपथ पर अगली झांकी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की झांकी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर उनके नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल आर्मी के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रही है ये झांकी। इस झांकी की खूबसूरती देखते ही बनती है। मैं दुआ मांगता हूं कि वो ताकत, वो जोश और बहादुरी दें जिससे हम लड़ाई लड़ें और हिंदुस्तान को आजादी पहुंचा सकें। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के तौर पर रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने वंदे भारतम नृत्य उत्सव शुरू करने की घोषणा की। यह पहली बार है कि अखिल भारतीय नृत्य उत्सव के माध्यम से चयनित सर्वश्रेष्ठ नृत्य समूह गणतंत्र दिवस परेड में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। यहां मौजूद कलाकार शास्त्रीय, लोक, आदिवासी, समकालीन को शामिल करते हुए 4 सेगमेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इस वाद्य वृंद रचना की भव्यता को बढ़ाने में विशाल प्रॉप्स, मुखौटे, कठपुतली और परिधान बहुत अहम हैं। अंतिम दौर में निर्णायक मंडल ने गणतंत्र दिवस परेड में नृत्य कौशल प्रदर्शन के लिए 15 राज्यों से 485 नर्तक की 36 टीमों का चयन किया। समय की नदी घाट इतिहास के, सदी दर सदी पाठ विश्वास के, संस्कृति की धारा सनातन बहे, ऋचाएं कथाएं पुरातन कहे, अनुभव से पाया गहन ज्ञान है, आत्मोन्मुखी योग है, ध्यान है, यहाँ दिव्य परिवेश है शांति का, यह है देश सौंदर्य की कांति का।
निरापद नए नित्य निर्झर झरें, गणतंत्र को आत्मनिर्भर करें। मयूरी झलक झिलमिलाई धरा, युवा इंद्रधनुषात रंगों भरा। आशीष सूरज का पाया तभी, रहें देश में स्वस्थ सुंदर सभी। सभी रंग वर्णों में एकत्व हो, यही स्वत्व हो और यही तत्व हो। चीर चले नाद नाद चले बंदे, दूर दूर चले मन में नूर चले एक सूर चले बंदे। नाद नाद चले गगन चीर चले नाद नाद चले बंदे, दूर दूर चले मन में नूर चले एक सूर चले बंदे। A canvas of color, music, song and dance spreading across the stretch of Rajpath with a fabulous spirit of festivity, the cultural legacy that India is richly blessed with. Vande Bharatam. And very soon,
On Rajpath, we will have the brave women motorcyclists of the border security force known as Seema Bhavani. राजपथ पर उपस्थित जनसमूह वंदे भारत की अविस्मरणीय प्रस्तुति से आह्लादित एक भारत श्रेष्ठ भारत को परिलक्षित करती हुई ये प्रस्तुति, और उधर राष्ट्रीय समर स्मारक पर शान से लहराता तिरंगा हमारे गणतंत्र की प्रगति और चौतरफा विकास का परिचायक। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और विशिष्ट दर्शक दीर्घा में उपस्थित जनसमूह अवलोकन करते हुए 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का। देश भर से चयनित कलाकार, मैकेनाइज्ड कॉलम्स, मार्चिंग कंटिंजेंट, सामरिक शक्ति, भारतीय संस्कृति, लोक वैभव का अविस्मरणीय विस्मयकारी नयनाभिराम प्रदर्शन राजपथ पर। अब बारी है जांबाजों के हैरत अंगेज प्रदर्शन की। सीमा सुरक्षा बल की महिला मोटरसाइकिल टीम सीमा भवानी की ओर सबकी निगाहें लगी हैं। Illustrating the power of women in the world, you have the Border Women's Salute under the command of Inspector Himanshu Sirohi. A spectacular display of their hard work, dedication and confidence. And in front of the saluting days now, the kneeling position, single Sub-Inspector Sonia Bhavari presenting her salute to the Supreme Commander. महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन चेयर राइडिंग। कांस्टेबल अनिमा कुमारी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ चेयर राइडिंग फॉर्मेशन में और सामाजिक संदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रिवर्स राइडिंग करते हुए ये टीम सुदृढ़ सुप्रशिक्षित होकर राजपथ पर मौजूद। Constable Rajvinder Kaur with double back riding, and behind her we've got Constable Anupam Kumari with opposite direction side riding double. सीमा भवानी की ये जोशीली टीम जिसे प्रशिक्षण दिया है कमांडेंट महावीर प्रसाद ने सलामी मंच के सामने से। Participating after 4 years after their debut in 2018, this is indeed a fabulous moment for all of us to take pride in the power of women, and especially the women of the BSF. अभिनंदन। कांस्टेबल गुरप्रीत और कांस्टेबल खुशबू के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम और गुलिस्तां का प्रदर्शन, गुलदस्ता, एरोबिक, हैरत अंगेज कारनामों को अंजाम देते हुए ये सीमा भवानी की टीम सीमा सुरक्षा बल से कांस्टेबल प्रतिभा सिंह और कांस्टेबल नंदिता के साथ 12 सदस्यीय टीम बेखौफ संतुलन और निर्भीकता से एरोबिक मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उपस्थित जनसमूह विस्मृत, आह्लादित, प्रसन्न। और अब पिरामिड फॉर्मेशन। सलामी मंच के सामने पहुंचने के क्रम में 33 महिला जांबाजों का प्रसिद्ध और विशाल पिरामिड कांस्टेबल उषा देवी, कांस्टेबल श्रुति आयरोली, कांस्टेबल नीता हंसदा जिसमें शामिल। The pyramid formation by Constable Usha Devi, Shruti Airoli, Meeta Hansda, Pandey, Preeti Rani, Sheenu, Rekha and Amanda. And now we've got the ITBP Himveers under the command of Inspector Guard Rajneesh with 4 other riders presenting the salutation to His Excellency, the President. भारतीय सीमा के हिमवीर, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के प्रहरी यहाँ राजपथ पर लोटस फॉर्मेशन में कांस्टेबल अश्विनी पराते, कांस्टेबल शिवकरण रावत के साथ 15 जवान आकर्षक फॉर्मेशन में, और उसके ठीक पीछे फ्लाई पास्ट की रोमांचक फॉर्मेशन में कांस्टेबल मोनू और उनके साथ कांस्टेबल रशीद खान के साथ अन्य जवान फिट इंडिया के संदेश को भी प्रतिपादित करने का प्रयास कर रहे हैं। Horizontal bar exercise. Fitness is the way of life for these
brave soldiers, the ITBP. We've also got the 6 men balance, a magnificent display of balancing techniques. Constable Sandeep Kumar and Constable Raman Singh leading this dangerous act. एरो फॉर्मेशन में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवान अद्भुत संतुलन, सतत अभ्यास और साहस का परिचय। और कुछ ही क्षणों के पश्चात फ्लाई पास्ट का प्रदर्शन होगा। और आमतौर पर हम देखते हैं जमीन से, लेकिन इस बार आसमान से भी नज़ारा देखने को मिलेगा फ्लाई पास्ट के दौरान उन्नत वायुयानों का। और यहाँ सलामी मंच के समक्ष हिमवीर आगे बढ़ते हुए और उधर राष्ट्रपति भवन के पीछे से उन्नत वायुयान वायु विचरण की मुद्रा में आगे बढ़ रहे हैं। The grand finale of the 73rd Republic Day Parade, with a fabulous display of balance and skill. The Jaguar positions, the symbol of spirit of the snow warrior, conveying the message that they are the sentinels of the Himalayas. Constable Dharmendra, Ashok Kumar and Vivek Khokar. All eyes now focusing on Rashtrapati Bhavan, from where we will have the flypast by 75 aircraft of the Indian Air Force and the Indian Navy participating in that grand show. So we saw perfect balance, total concentration and absolute discipline here on the ground. It's a windy day, so the wind definitely plays a role in getting the balance right. And we now move from these beautiful moves to eyes in the sky from the direction of Rashtrapati Bhavan. The first formation going past the saluting base, Rahat, comprising 5 ALH aircraft in Arrowhead Formation, led by Wing Commander H.S. Chima, Wing Commander G.D.K. Reddy, Wing Commander S. Jamkas, and Wing Commander J. Rathore, Wing Commander Nenwa. और अब कुछ ही देर में सलामी मंच के ऊपर होगी मेघना फॉर्मेशन। ग्रुप कैप्टन मनीष गुहा, जो चिनूक को उड़ा रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य पायलट मी-17 को उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एन मेहरोत्रा, विंग कमांडर गोपी कृष्णन, स्क्वाड्रन लीडर मोहित और स्क्वाड्रन लीडर पी.एन. रेड्डी। Special provision has been made to give you aerial shots too. So normally we take a look at the flypast from ground upwards, and here you're getting a view what the pilots actually see when they look down. अद्भुत दृश्य, सही मायनों में विहंगम दृश्य जिसे हम कहते हैं, वो देखने को मिले। और इसके बाद तिरंगा फॉर्मेशन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विंग कमांडर गिरीश कुमार और अन्य पायलट विंग कमांडर वाई श्रीधर, स्क्वाड्रन लीडर वीर कुमार, स्क्वाड्रन लीडर चंदन पटनायक और विंग कमांडर गोपी कृष्णा। इस फॉर्मेशन में 5 सारंग ALH लैडर फॉर्मेशन में तिरंगा फहराते हुए दिखेंगे। Coming in the direction of saluting base, we have the Tiranga Formation, led by Wing Commander Girish Kumar, Wing Commander Y. Sridhar, Squadron Leader Veer Kumar, Squadron Leader Chandan Patnaik, and Wing Commander Gopi Krishna, all participating in this formation. Here you can see what the pilots are seeing. A bird's eye view, an aerial view, an eye in the sky. The Tiranga going past the saluting base. आमतौर पर हम कहते हैं विहंगम दृश्य, जो कि पक्षी की आंख से दिखाई देता है। यहाँ वायुयानों की आंखों से जो दिखाई दे रहा है, वो दृश्य हम देख रहे हैं। और अब एकलव्य फॉर्मेशन, नेतृत्व ग्रुप कैप्टन राजशेखर रेड्डी कर रहे हैं। एक MI-35 की अगुवाई और पीछे 4 अपाचे हेलीकॉप्टर्स।
5 एरोहेड फॉर्मेशन में उड़ान भर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन क्षितिज अवस्थी, ग्रुप कैप्टन विजय राघवन, विंग कमांडर C.K. राव, विंग कमांडर G. पठानिया, अन्य पायलट। Traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft and showcase flying skills and delight the public. And now we look forward to Tangel. This formation comprising 1 Dakota aircraft in the lead with 2 Dornier aircraft in echelon flying in Vijay Formation will fly past at a height of 300 meters over the water channel north of Rajpath. The Dakota is being flown by Wing Commander S.S. Gehlot, the Dorniers by Wing Commander Shubham Mishra and Wing Commander Abhishek. We're all in for a very spectacular aerial display with cameras specially positioned, views never been seen before. Taking you up to the heights, they go, touching the sky with glory. The visuals giving you a feel of chill in the air, which we're all experiencing here down on the ground. और अब त्राण फॉर्मेशन, इसमें आगे एक C-17 और पीछे 2 C-130 400 मीटर की ऊंचाई पर राजपथ के उत्तर में वाटर चैनल के ऊपर से निकल रहे हैं। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन रविनंद और दूसरे पायलट्स हैं विंग कमांडर राहुल रावत, विंग कमांडर हरिओम दुबे। The clear blue skies today, perfect weather for a perfect fly past. And for these men in blue of the Indian Air Force, the blue sky seems to be just an extension of them as they take wing and vanish into the blue. We now look forward to the next formation. This is the Nitra Formation. Group Captain Pranjal Singh with Squadron Leader Rahul Yadav. The Su-30's Group Captain Arpit Khanna with Squadron Leader Aditya Sinha. Wing Commander Varun Bhoj with Flight Lieutenant Abhishek Bhandari. And the MiG-29's Group Captain K.D. Singh. Wing Commander Amol Sudhir Kelkar. ये विमान विभिन्न शहरों से उड़ान भरते हैं, अनुशासन, समन्वय और सटीकता से अपनी अपनी उड़ान को अंजाम देते हैं। So slowly as the fly past progresses, speeds will increase, heights will increase, and our pulse rate too. और अब वरुण फॉर्मेशन, नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन नामबियाद सुदीप। इस फॉर्मेशन में एक P-81 विमान और पीछे 2 MiG-29 विमान विग फॉर्मेशन में उड़ान भरते नजर आ रहे हैं। अन्य पायलट हैं MiG-29 के कैप्टन S.S. सांब्याल और विंग कमांडर C.V. भट्ट। Excitement galore at the Republic Day Parade right now. Speed, pulse racing, daring, and of course there is precision. Beautiful visuals.
from our cameras, giving you an actual feel of what the fly past entails. Now we have Vinash approaching the saluting base, comprising 5 Rafale aircraft. Arrowhead formation, 300 meters at the height of AOL, above obstruction level. पलक झपकते ही ये यहाँ से ओझल हो जाते हैं, लेकिन दूरदर्शन के कैमरा इनको दूर तक कैप्चर करते हैं। और अगली फॉर्मेशन के लिए अब आप तैयार हो जाइए। अगली फॉर्मेशन है बाज। इस फॉर्मेशन में 1 रफाल, 2 जैगवार, 2 MiG-29 यूपीजी, 2 सुखोई 30 MKI विमान 7 एरोहेड फॉर्मेशन में 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। नेतृत्व विंग कमांडर विक्रम कर रहे हैं। अन्य पायलट हैं जैगवार में ग्रुप कैप्टन एन अभिषेक और सैफ जैदी, MiG-29 ए रंजन और विंग कमांडर मुकेश, सुखोई में विंग कमांडर करण डोगरा और विंग कमांडर ए के तिवारी। और ये आए बाज फॉर्मेशन में। Bars formation going past. All eyes up in the sky. Heads turned skywards. Gaze searches for the glimmer of silver. A message goes out to the future. We see you and we're preparing to meet you. Specially recorded for you visuals. Here, after the buzz, we now look forward to the Trishul formation, comprising 3 Su-30 MKI aircraft, which will fly past in big formation at 900 kilometers per hour, maintaining 300 meters AOL over water channel north of Rajput. This formation will pull up and outward for the Trishul maneuver. Going higher up into the clouds and then peeling into 3 different directions. The Trishul formation under the command of Group Captain A. Dhankar. The other pilots, Group Captain Karan Deo and Wing Commander Gaurav Sharma. In the words of a pilot, the roar and the thunder can be actually felt in the pounding of your heart. As these visuals tell you, absolute concentration, absolute precision, flying from different places, all coordinated to perfection. And now we have the Vijay Formation. 1 Rafale aircraft will be flying in at 900 kilometers per hour behind the Tiranga Formation, maintaining 300 meters AOL. We'll execute 2.5 turns. Group Captain M. Jam in this aircraft, you can see carrying out the vertical Charlie. Touching the sky with glory. आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, और आजादी के 75 वर्ष इसी वर्ष हम पूरे कर रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में अब अगली फॉर्मेशन है अमृत। इस फॉर्मेशन में 17 जैगवार विमान 75 की आकृति बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह, ग्रुप कैप्टन गौरव अर्जारिया और विंग कमांडर संदीप जैन। अन्य पायलट हैं ग्रुप कैप्टन एनपी वर्मा, विंग कमांडर प्रखर, विंग कमांडर रोहित राय, विंग कमांडर सिद्धार्थ, विंग कमांडर अंकुश तोमर और विंग कमांडर पवार। What a splendid display it is. For the first time, we also have some naval colleagues of the Indian Armed Forces flying with their Air Force colleagues. The diffused glow of a chilly January morning, witnessing, along with all present, the reaffirmation of our national identity, a nation on the move, men and their machines, defining the sky space.
And so after enthralling everyone here as these magnificent men in their flying machines head towards their landing base, our hearts also land back to ground earth. नभम स्पृशम दीप्तम, आकाश की ऊंचाइयों को शान से छूना है, ये मूल मंत्र है हमारी वायुसेना का। रोंगटे खड़े करने वाले और सभी को रोमांचित करने वाले फ्लाई पास्ट के हम यहां राजपथ पर साक्षी बने। And what a splendid display it's been today. From the solo power of a soldier to the combined and many times over multiple power of man in sync with machine, inspirational, rewarding, and definitely applaudatory. For many of us, witnessing this fly past, these are memories that we are going to capture and keep with us for a very long time. And today we saw the limitlessness of the sky, setting the tone for the limitless passion, experience and skill of our pilots. For any celebration to have meaning, its reasons need to be lived collectively, and we are living those reasons collectively as we all come together to celebrate our national festivals. In the words of Adlai Stevenson, patriotism is not short, frenzied bursts of emotion, but the tranquil and steady dedication of a lifetime. And so, let us then rededicate ourselves today to ensure that the safety, sanctity and security of the country comes first, always and every time. जब हम भारत के गणतंत्र बनने के बाद के इन वर्षों के इतिहास पर नजर डालते हैं, तो भारत को नई ऊंचाइयों पर पाते हैं। सही मायनों में भारत ने लोकतांत्रिक गणराज्य का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है, ऐसा मार्ग प्रशस्त किया है, जिस पर राष्ट्रवासी गर्व महसूस करते हैं। Freedom in the mind, strength in the words, pureness in our blood, pride in our souls, and zeal in our hearts. As we salute the Republic of India, 1,000 salutes. The President's bodyguard taking position now as we come to the close of the 73rd Republic Day Parade. President's bodyguard will shortly give the word of command for the national salute. All ladies and gentlemen are requested to rise for the national anthem of India. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। And now, as is traditional on this celebratory day, with the President and the Prime Minister also greeting each other, we can see hundreds of balloons in the colors of the national flag winging their way upwards as if carrying with them the aspirations of more than 1.3 billion Indians, as if moving towards a higher calling. India, a young country on the move and aspiring. Visual images have a way of imprinting themselves on our minds
And then these memories last for a lifetime. Prime Minister and the President will now leave the saluting base. The Prime Minister will see off President Ramnath Kovind and Mrs. Savita Kovind. विभिन्न संस्कृतियों की समृद्ध परंपराओं का अद्भुत संगम और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा देश भारत आज न जाने कितने देशों का प्रेरणा स्रोत बन चुका है। समृद्ध परंपराओं, एकता और समानता की मूल भावना के साथ हमारा देश सफलता की नित नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजपथ पर आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का समापन हुआ शानदार फ्लाई पास्ट से। In fact, ceremonial conclusions on days like today never have an air of finality about them. National celebration always leaves us suffused with feelings and thoughts of gratitude for the past, festivity for the present, and belief in the future. And whenever we celebrate together, that which separates us seems to disappear, and that which unites us becomes the only reality. That's the power of a nation. This is the charger Virat, the PBG Commandant's horse, steed, trusty steed, which is now being bid adieu. As we shared earlier with you, Virat retires. He's also been presented with the Chief of Army Staff's commendation card. And it's a very sentimental moment for the Commandant of the President's bodyguard. This majestic steed, graceful arch of the neck, beautiful gentle trot has seen 10 Republic Day parades. Another successful Republic Day celebration here in the capital, New Delhi. The Prime Minister and Defence Minister seeing off the President. माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद राजपथ से राष्ट्रपति भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में राष्ट्र की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद उपस्थित जनसमूह का अभिवादन किया। हाथ हिलाकर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के सजीले घुड़सवार अंगरक्षकों का दस्ता कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी के नेतृत्व में अपने घोड़े विराट पर, जिसे कुछ ही समय पूर्ण भावभीनी विदाई दी गई, वर्षों तक जिसने प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की सेवा की है, राष्ट्रपति महोदय का काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर अग्रसर 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का परिणति की ओर अग्रसर होता हुआ वायु विचरण करते हुए उत्तम विमान राजपथ पर गुजरने वाले अस्त्र शस्त्र की गरज हम सब ने महसूस की। संस्कृति, नृत्य, सौंदर्य का समावेश, अपार जनसमूह की भागीदारी और सिर्फ प्रशंसा, चौतरफा विकास, प्रगति का रास्ता तय करता हमारा देश, जिसका साक्षी बनते हुए हम सभी राजपथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ बातचीत करते हुए इस अवसर पर As the curtains come down on the celebrations at Rajpath, the celebrations actually continue and carry on across the nation as everyone gets together to unfurl the national flag. The infectious celebratory spirit prevailing as all of us rejoice in our republic across the country. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, walking towards where the spectators greet him eagerly,
all waving their hands and acknowledging the Prime Minister's greeting as he wishes them on this 73rd Republic Day parade. All witness to the grand spectacle that unfolded on Rajpath, a historic parade celebrating 75 years of India's independence, the pomp, the pageantry, the grandeur, all rolled into one as a beaming Prime Minister walks down Rajpath, acknowledging the greetings of his citizens. The newly refurbished Rajpath with the backdrop of the scrolls that were hand-painted, telling us stories of the unsung heroes. A special moment for all the spectators who are here to be able to see the Prime Minister close up. A moment that they're not going to forget very easily. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित दर्शकों के बीच अक्सर पहुंचते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और यहाँ जितने भी दर्शक उपस्थित हैं उनके लिए भी एक क्षण ऐसे हैं जिन्हें वो कभी शायद भूल ना पाएं। So though the parade concludes at Rajpath, the Prime Minister, which has also become a tradition now, walking along the enclosures, greeting the people and acknowledging their greetings. We as Indians have much to celebrate. A republic where the Constitution is the guiding spirit, a diversity that helps us understand differences with sensitivity, a young population that could be an economic boon, and a unity that bridges differences and challenges divisive forces. This connect with the people, this walk down Rajpath, is what makes the connections in democracy. हर वर्ष यहाँ उपस्थित दर्शकों को इन्हीं पलों का इंतजार रहता है क्योंकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उनसे मिलने के लिए उनके बीच पहुंचते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और यही दृश्य हम कुछ समय से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार यहाँ राजपथ के दोनों ओर बैठे हुए दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका अभिवादन कर रहे हैं। So as we take in these visuals, we also see that today we have a day of introspection and taking stock, so to say, of how the past years have shaped us, of opportunities taken or missed, of milestones achieved or miles to go, of what we could be or should be. Yet the heart can't help but color itself in saffron, white and green and celebrates it. Walk, its reaffirmation, committing itself to the nation. राजपथ के दोनों ओर उपस्थित जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने को आतुर हैं। यह अविस्मरणीय अवसर है उनके समक्ष। इस मौके को वो अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते और 73वें गणतंत्र दिवस को पूर्णता प्रदान करती हुई ये तस्वीरें हैं आपके समक्ष। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सदैव ये प्रयास रहता है कि आम जनता से, हर खासो आम से उनकी सीधे मुलाकात हो, सीधे भेंट हो और चाहे वो कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर जनता से साक्षात्कार, सदैव वे आगे रहते हैं और आज एक मर्तबा फिर उन्होंने इसका सबूत दिया है। 73वें गणतंत्र दिवस समारोह को बहुतों के लिए यादगार बनाया है। Indeed, Azadi Ka Amrit Mahotsav, the campaign that he has been promoting,
This is yet another symbolic representation of that as he reaches out to the common man and includes them in every celebration that the nation is putting forth. 75 years of wisdom, progress and achievements, successes, a civilization that is much older, and together we all join in the celebration of a fabulous nation, the fabric of India. Happy 73rd Republic Day. Prime Minister Narendra Modi prepares to depart from the saluting base after the culmination of yet another impressive and heartwarming Republic Day celebration. And all that we saw on display here today, sending out this clear message: no other land in the world has harbored so many creeds since time immemorial. And today we have evolved into a multi-hued kaleidoscope of cultures, a nation with different tones and hues. But the ultimate composition is forever one. भारत, जहां हर व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय समान है, जहां सभी के सपनों को अहमियत मिलती है और देश को आगे ले जाने में सभी की भागीदारी है। यहां लोगों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो अभिवादन स्वीकार कर रहे थे यहां लोगों का। राजपथ, जहां आज 73वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड होकर गुजरी, महामहिम राष्ट्रपति ने परेड की सलामी ली और एक भावुक क्षण तब भी आया जब उनके घुड़सवार अंगरक्षकों ने अपने वरिष्ठ घोड़े विराट को आज विदाई दी। A bird's eye view of the venue here. The velvety grey Rajpath witness to another beautiful celebration. हम उस स्वप्न को सार्थक करने और उससे भी आगे का सफर तय कर रहे हैं जिसे भारत के गणतंत्र बनते समय देखा गया। पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे वंदे